brought into this house, and I appeal to you that that should not be entertained. It should be expunged. I take very strong exception to this. Ask the Congress party members who are in alliance with them, if they go along with that, how could that house be hearing this? How those could this observations house be are hearing expunged. it? Congress should stand up and say. I am sure, Honorable, one second, please. Take your seat. All of you take your seat. Please take your seat. Take your seat, honorable members. Honorable, one second. Please, please, please. Mr. Arora, please. Honorable members. One second. Please, observe silence, please. Honorable members, it was not a good spectacle. It is so serious. In this house, the House of Elders, the upper house, can we countenance someone talking of such kind of language? Determination on the basis of race? That goes against very essence of Constitution. We all have taken oath of the Constitution. How can we countenance such kind of misdemeanor by a member? This is not freedom of speech. This goes much beyond that. Every word the member has spoken cannot be accepted. It cannot be countenanced by anyone who believes in the nation, who believes in our Constitution. I'm expunging those parts. Mr. Arora, please go ahead. Mr. Arora, do you want to take floor, Mr. Arora? Yes. And keep calm. Sir, keep calm. You are a senior member. You know what has been spoken. How it pains our heart. Please, let him continue. Yes, Mr. Mr. Arora, take your seat, leader of the opposition. Sir, before you speak, I'll make fervent appeal to you. We have freedom of speech here. That freedom comes with great responsibility. That message goes to the entire world. We have a member who talks of that principle. Please go ahead. बोलिए सर. आपने स्माइल तो किया कम से कम. नहीं, स्माइल करता हूँ, लेकिन उतना नहीं आता जितना आप करते हैं. थैंक यू. सर, ये एक पार्लियामेंट मेंबर अपनी बात रखने के लिए कोशिश करता है, स्टडी करके लाता है, अपने व्यूज को आपके सामने रखता है. अगर वो ठीक नहीं है, कानून के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, आपके बिजनेस रूल्स के तहत, तो उसको आप निकाल दे सकते हैं. लेकिन आप टोटली अगर उधर के लोग उठे, गड़बड़ करे, तो आप वो कहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. ये मैं नहीं मानता. आप जरा जो आदमी इधर जो मेंबर इधर कहता है उसको कहने दो. और रिपोर्ट करने के लिए तो चाणक्य है ना, रिपोर्ट करने के लिए यहाँ तो होम मिनिस्टर बैठे हैं, वो हर चीज का रिप्लाई देने के लिए समर्थ है. दूसरे लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं. और आप कितना भी कोशिश करो, कोई मिनिस्टर बनने वाले नहीं जब तक शाह और मोदी साहब बोलेंगे. डीएमके ने बात कही, माननीय सदस्य डीएमके इनके साथ अलायंस में है, दोनों की गठबंधन की सरकार है. ये घमंडिया गठबंधन के बारे में सब लोग जानते हैं. ये इतना स्पष्ट कर दे सर, ये इतना स्पष्ट कर दे कि वो कहते हैं कि सबका अधिकार है. तो जो माननीय सदस्य डीएमके ने कहा उससे वो सहमत है या नहीं है, हम इतना ही अनुरोध कर रहे हैं. कांग्रेस स्पष्ट कर दे कि वो सहमत है कि नहीं है. और रही बात घमंडिया गठबंधन की, उन्होंने माननीय गृह मंत्री को अभी चाणक्य कहा. वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे गृह मंत्री पे हमें गर्व है, लेकिन इन्होंने ही अभी ये शब्द. ओके लीडर ऑफ द हाउस, ओके, वन सेकंड. I'll give floor. One second. I'll give floor to the. One second. Take your seat.
नहीं, you don't allow me. Sorry, take your seat. No, take your seat. Do you want me to name you? No, do you want me to name you? You can't take your seat. Do you want me to name you? Sorry, take your seat. I would, since it is a very important issue. One second. Honorable members, one second. Ma'am, you are forcing me. Take your seat. Take your seat. Honorable members, I don't want to raise my voice. I have a bad throat. Take your seat. No. Take your seat first. Allow me to say something. This is your senior member. Sit down. Please sit down. Sit down. Take your seat. Nothing will go on record. Take your seat. No, take your seat first. Take your seat. Take your seat. Mr. Gokhale, take your seat. Honorable members, what the honorable member had spoken is too serious. One second. I expected leader of the opposition to take a serious view of what the honorable member had spoken. It outraged the spirit and essence of the Constitution. It questions our integrity. It questions our existence. It can't be put under the carpet because right of freedom. I would expect the honorable leader of the opposition to make his point known on the issue. I had intervened because the honorable member had crossed all limits. Yes. Sir, self-determination. An issue of self-determination being talked about is no, sorry. Take your seat first. Take your seat. One second. No. Unless you take your seat, I will not allow anyone to hold the floor. Take your seat. Yes, Mr. Venugopal. In a cool manner, in a composed manner, taking note of the serious assertions of the honorable member. What I heard your serious observation on Abdullahji's speech, honorable member's speech. But what my request to you, you please go through the records. While speaking, he quoted Periyar, one of the most important reformers of the country. What Periyar told about with this different caste, different religion ke liye, Periyar told like that only. He quoted Periyar's speech only. But how you verify, sir? You verify, sir? Sit down. Take your seat. One second. Would you take your seat? Take your seat first. Take your seat. Don't become a shouting brigade. Take your seat. Honorable members, can we quote anything in this house? Can we quote to the extent of it being sedition, challenging our integrity, going against our constitution, going against the judgment of the Supreme Court this day? No, that will not be acceptable. Mr. Arora will take the floor. No, I will not allow it. Sorry. No. I thought you will contradict him, sir. I thought you will contradict him. No. Honorable Home Minister. माननीय सदस्य ने जो कहा रिकॉर्ड पर रखना नहीं रखना आप राज्यसभा के नियम और आपके विवेकाधिकार पर जाता है, परंतु मेरे मन में ये सारी बात सुनकर एक छोटा सा सवाल आता है कि कांग्रेस पार्टी स्टेटमेंट से सहमत है क्या? तो आप लोग जो कह रहे हैं इसको तो मैं समझ रहा हूं कि आप सभी सहमत
इस स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड स्पष्ट कर देना चाहिए साहब, ये रिकॉर्ड स्पष्ट होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी मिस्टर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट से, माननीय सदस्य अब्दुल्ला के स्टेटमेंट से सहमत है क्या? क्वेश्चन बड़ा शार्प है साहब, कांग्रेस पार्टी इनके स्टेटमेंट से सहमत है क्या? लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन, टेक योर सीट, ऑल ऑफ यू। लेट अस हैव cool, calm, composed atmosphere. Take your seat. Leader of the opposition alone will speak. Leader of the opposition will speak. Others take your. देखिए साहब, Every time you keep on shouting, there are not good. You must have some silence zone. उन्होंने जो कोट Some silence zone. That will उन्होंने help you and the house. Yes, sir. Go ahead. सर, उन्होंने जो कोट किया, पेरियार के जो लिखी हुई बातें हैं और कही हुई बातें हैं, उन पर उन्होंने बात किया। उस विचार से आप सहमत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, हम भी सहमत हो सकते, कई बातों नहीं भी हो सकते, लेकिन आप जो उनके विचारों को, उन्होंने लिखे हुए विचारों को उन्होंने यहाँ प्रस्ताव किया, वो उनकी बात नहीं है, उनकी बातें नहीं है, कोटेशन उन्होंने कोट किया, जो उनको कहना था वो किया। तो आप कितने ये बातें जो उनको कही हुई है, उस विचारधारा यहाँ पर वो बोल रहे हैं, उससे हो सकता है वो भी सहमत नहीं है, हम भी सहमत नहीं, आप भी सहमत नहीं हो सकते, लेकिन बार बार उसको बात करने से रोकना, दिस इज मोस्ट अनडेमोक्रेटिक। फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप रोक रहे हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कट करने की आदत तो है उनको, इनको भी वैसा ही कर रहे हैं। किनको आदत है सर? हाँ, गवर्नमेंट को नहीं सर, आपको कैसा बोलूं? यहाँ तो मुझे ही कंट्रोल करना है। मैं आप तो आपसे बोलता ही नहीं, क्योंकि आप बात को तलवार उठाते हैं, इसलिए मैं अपनी गर्दन छुपा के रखा। मैं प्रतिपक्ष के नेता को एक बात कहना चाहूंगा, कोट करना एक बात है, he was quoting it affirmatively, he was drawing oxygen from it, he was taking sustenance from it, I was fully alert, this can't be permitted in this house, no, this can't be done. Dr. Jitendra, I'll give you one small point which contradicts what Honorable Venugopal ji said, that he is quoting Pariyar ji. Agree or not agree? He is see the intent of quoting. Yes. He is quoting to endorse his point. yes. It is not a simple quotation. No. It is not an academic quotation. It is not an academic citation. He is quoting to endorse his view. He is quoting to endorse his view. Yes, That is Digvijay the Singh ji. difference. But before that, Digvijay Singh ji, you are an experienced member. I'll put it to you. So what, sir? Do we quote to take wind out of our argument? We quote to support our argument. We quote to give strength to our argument. That can't be allowed. Go ahead. आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, न आप पक्ष के हैं न विपक्ष के हैं, आप निष्पक्ष हैं, आप रेफरी हैं, आप गोल मारने के लिए नहीं हैं कि इधर से मारें या इधर से मारें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोई भी माननीय सदस्य यहाँ अपने विचार व्यक्त करता है, ये उसका अधिकार है और रहेगा। सुनिए, वन सेकंड सर। और माननीय गृह मंत्री जी से मैं कहूंगा, क्या सहमत, हर बात में आपकी सहमति जरूरी है क्या? हमारी सहमति जरूरी है क्या? ये अगर सहमत पूरा सदन सहमत हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र कहां से रहेगा? इसलिए माननीय आपसे अनुरोध है, माननीय आप 2 मिनट सुन लीजिए, मेरा आपसे अनुरोध है, माननीय सदस्य ने अपने भाषण में अपने विचार व्यक्त किए, उसका अधिकार है। 1 सेकंड, और कोट किया। मैं आपसे निवेदन करना, और सुनिए, आपका एक निष्पक्षता से बैठकर आपको यह अधिकार है, यदि कोई अनपार्लियामेंट्री है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो डिलीट करिए, तो उसको भाषण से रोकते क्यों हैं आप? एक सेकंड। दिग्विजय सिंह जी, it is much beyond being unparliamentary. It is much beyond expunction. ये भारत माँ की आत्मा पर प्रहार था।
That was the objection. I don't agree to that. Sorry. Yes. मैं पूरी तरीके से माननीय दिग्विजय सिंह जी का आदर करता हूं, माननीय एलओपी का आदर करता हूं। बहुत आपने सही कहा कि अधिकार है, सभी का अधिकार है कि पेरियार जी के स्टेटमेंट से समर्थन दे या नहीं दे, एग्रीड। तो हमारा आपसे सिर्फ इतना ही एक अनुरोध है कि डीएमके के माननीय सदस्य जो बोल रहे थे अब्दुल्ला जी और माननीय एलओपी, आप जो भी आपके अधिकृत सांसद नेता है, इतना बता दें कि ठीक है, आप पेरियार जी ने जो कहा उसके असमर्थन में खड़े हैं, इतना ही बता दीजिए। हम तो नहीं कह रहे आप समर्थन करिए, आप स्पष्ट कर दीजिए आप समर्थन में हैं। ओके मिस्टर अरोड़ा, नहीं है तो भी बता दीजिए, आप बोलिए कि ये मिस्टर अरोड़ा, मिस्टर अरोड़ा, only what Mr. Arora will say will go on record. Mr. Arora, that's all. Take your seat. Mr. Arora. एक सेकंड, take one second. मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, पेरियार ने जो कोर्ट का इस्तेमाल किया है उस कोर्ट का हम समर्थन नहीं करते हैं। पता नहीं इतना समय क्यों लगाया ये कहने में, थोड़ा रास्ता और नाप लेते। अरोड़ा जी आप बोलिए। सर, पर मेरी आपत्ति से ज्यादा है, आप तो समर्थन नहीं करते हैं, बट इन दिस हाउस सिटिंग ऑन दिस चेयर having taken oath of the constitution like all of you, I cannot allow any assertion in support of a statement that is against integrity of the nation. Mr. Arora alone, others take your seat. Mr. Arora, Mr. Arora, your 6 minutes. Use your 6 minutes. right, sir. Thank you. Sir, I thank you, Honorable Chairman, Please, sir, take your seat. Mr. Arora, take your for seat. giving me. Mr. Arora, take your seat. Leader of the opposition wants to say something. उन्होंने Sir. पेरियार के विचारधारा बहुत से अलग अलग समय में। सर एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जयराम जी ने अथॉरिटेटिवली आप सबके बिहाफ पर एक बात कह दी है, उसमें कुछ ऐड करना है? नहीं, सबके तरफ से नहीं, फर्मली अथॉरिटेटिवली। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। सर, ये ऐसा है कि कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है। जैसा कि मनुस्मृति को कोई लोग मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते, ये तो सच है ना। तो वैसा ही हमारे देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग विचार के लोग हैं, और कोई समर्थन करते हैं, कोई समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इसलिए मैं ये कहूँगा कि मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल के, या रब मैं कहाँ से लाऊं सर बदल के। कहाँ है हमारे त्रिवेदी साहब? तो ये मक्तल है, जैसा है, हमारा सर काटने के लिए तैयार हो गए हैं। तो हम मक्तल में जो भी आएंगे वो खंजर बदल के ही आएंगे, लेकिन सर तो हमारे पास एक ही है, इसीलिए सर बदल के तो नहीं हम कर सकते। सर मेरी हालत समझिए, मैं लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के बीच में हूँ। ऐसे ही रही साहब, ये अच्छा है, आप ऐसा ही रहे तो यस मिस्टर गोयल। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बहुत सही कहा कि उनके लिए आज बहुत गंभीर समस्या की बात है। उन्हीं के कम्युनिकेशन चीफ जो उनके ट्वीट से वो सब पार्टी के विचारधारा को देश के समक्ष रखते हैं, उन्हीं की बात को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज एक प्रकार से खंडन करने का मैसेज भी देश को दे दिया। लेकिन मेरा अनुरोध आपसे सिर्फ इतना है सर कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हमारे ऊपर आरोप ना लगाएं। हम ना किसी का कत्ल करना चाहते हैं और उनको अपने सिर को बचाने की जरूरत नहीं है।
वो तो रावण करता था इस प्रकार के काम, वो यहाँ इस सदन में किसको जरूरत नहीं है। लेकिन उनको जनता से डरना चाहिए, क्योंकि जनता बार बार मौका ढूंढ के इनको तकलीफ क्रिएट कर रही है। तो जनता की चिंता करो, एक मत होके एक विषय के ऊपर एक ही अपना मत बनाइए आपके गठबंधन में। इसीलिए मैंने कहा यूपीए का नाम बार बार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो गर्दन बदलने से फर्क नहीं, वैसे यूपीए का नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। वो वैसे ही घमंड में रहेगा, वैसे ही भ्रष्टाचार में रहेगा, वैसे ही तुष्टीकरण करेगा और वैसे ही परिवारवाद पे रहेगा। यूपीए हो या यस, यू वर सेइंग समथिंग सुधांशु। सर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था ना कि कुछ जवाब दिया जाए, तो मैं भी एक ही लाइन में जवाब देता हूं सर। एक ही लाइन, गो अहेड। सर, 1967 से उस राज्य से मामला छूटा, मगर आदत नहीं बदली। तो मैं भी कहना चाहूंगा सर, उनकी आदत के लिए कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। मिस्टर अरोड़ा नाउ, मिस्टर अरोड़ा, okay, leader of the DMK legislature party, Tiruchi Shiva. I think hype is made on a very ordinary statement, sir. He meant that we have to decide, not you. Yeah. Tiruchi, it has to be very brief intervention. Yes, sir. Very brief. When an ordinary matter has been made as a very big thing, that something has been derogatively remarked by and everyone has made in that issue, I have to make my remarks, sir. Sir, member was corrected. Before you do that, Tiruchi, before you do that, I gave enough opportunity to your member to reflect and withdraw. He continued. I thought leader of the opposition will calm him down. That did not happen. Say what you have to say, please. Sir, the member in his position in the capacity of a member was speaking something. First, when he said that about the article abrogation of 370, sir, your intervention said that it is against the Supreme Court order, what has been decided today. Sir, tomorrow if the Indian alliance wins and come to the power, and if Article 370 is restored, wait. One second. Let me speak, sir. Let me speak. नहीं शिवा साहब एक मिनट। शिवा साहब डीएमके का एजेंडा बता रहे हैं कि आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे या पूरा इंडी अलायंस का एजेंडा है, उसकी स्पष्टता कर देनी चाहिए। We were against the abrogation. Still now, that's happened. Again, he quoted Periyar, sir. What Periyar said was that every race has a right to determine their own rights. What is wrong in that? What is wrong in that, sir? Sir, no. They don't agree. Sir, let me complete. Sir, don't give a please, let us hear him in absolute patience. It's a very important issue. Yes. Please, very, very important issue. Yes. Sir, don't. The entire nation is watching us. Yes, sir. Very important issue. We are very much aware of it. They are trying to give a different color to us. Sir, DMK in 63, when the Chinese aggression came, we gave up our then slogan, separate Dravida Nadu. Later, we were very firm that DMK is for the unity and integrity of this nation, and every state should have its rights, and federalism was supported by us, and we stood with the policy of state autonomy. So don't try to give DMK a different color. We are second to none, sir. During the Chinese aggression, we gave up our policy. And during the Bangladesh war, we gave the largest money. And every time, whenever India is in distress because of external aggression, we are. What is your stand on what he said? Sir, he quoted Periyar, sir. What is it? Can this be quoted? Sir, you're right. To back up an argument? Sir, what is it, sir? Please, you have to enlighten me, sir. You have to enlighten me. No. What is wrong in quoting Periyar? Periyar has said nothing, sir, in favor only of a particular race of people. There is nothing wrong, and every race has a right to self-determine. So is the India Alliance as a
Well, let the people take note of it. Mr. Arora. Sir, Mr. Arora. now and- Sir, 1 second. Mr. Arora now. Mr. Arora will hold the floor. Sir, I am concerned very seriously if determination takes place on such a plank and that argument is used to buttress your point. Nothing can be more outrageous than this. Nothing can be more outrageous than this. Yes. Mr. Arora. Nothing will go on record now. Mr. Arora. Mr. Arora. Your 6 minutes start now. Start. Nothing else will go on record except what Mr. Arora says. Yes, Mr. Arora. No, only Mr. Arora. Mr. Arora. Sir, please. Mr. No. I don't want a situation to further worsen. Let me tell you, everyone in the country is concerned. Everyone is concerned. No, I have given enough indulgence. Okay. Hello. Sir, DMK need not be given any other color. This house, and I appeal to you that should not be No, it's entertained, expunged. it should be expunged. I And if take it very comes to it, strong I would exception like to this. ask the Congress party members who are in alliance with them, if they go along with that, No, how could no, that house be hearing this? How those could this house be observations hearing are it? expunged. Congress should stand up and say, I am sure, Honorable, 1 second, please. Take your seat. All of you take your seat. Please take your seat. Take your seat, honorable members. Honorable, 1 second. Please. Mr. Arora, please. Honorable members. 1 second. Please. Observe silence, please. Honorable members, it was not a good spectacle. It is so serious. In this house, the House of Elders, the upper house, can we countenance someone talking of such kind of language? Determination on the basis of race? That goes against very essence of Constitution. We all have taken oath of the Constitution. How can we countenance such kind of misdemeanor by a member? This is not freedom of speech. This goes much beyond that. Every word the member has spoken cannot be accepted. It cannot be countenanced by anyone who believes in the nation, who believes in our Constitution. I am expunging those parts. Mr. Arora, please go ahead. Mr. Arora, do you want to take floor, Mr. Arora? Yes. And keep calm. Sir, keep calm. You are a senior member. You know what has been spoken. How it pains our heart. Please, let him continue. Yes, Mr. Arora, take your seat. Leader of the opposition. Sir, before you speak, I'll make fervent appeal to you. We have freedom of speech here. That freedom comes with great responsibility. That message goes to the entire world. We have a member who talks of that principle. Please go ahead. बोलिए सर. आपने स्माइल तो किया कम से कम. नहीं, स्माइल करता हूँ, कभी लेकिन उतना नहीं आता जितना आप करते हैं. Thank you. सर